Hello students, my name is Ajay Sahu. Today we talk about India's neighbors. मैं भारत के जो पड़ोसी हैं, पड़ोसी देश, वो कौन कौन? India occupies an important strategic position in South Asia. India shares its land boundary with Pakistan, Afghanistan in the northwest, China, which include Tibet, Nepal, Bhutan in the north, and Myanmar and Bangladesh in the east. Our southern neighbors across the sea consist of the two ASEAN countries. In the northwest, India shares its boundary with Pakistan and Afghanistan. China and Nepal are its northern neighbors, which include Tibet. Its eastern neighbors are Bangladesh, Myanmar. Maldives and Sri Lanka are its southern neighbors. मालदीव और श्रीलंका क्या है? इसके साउथर्न, इसके दक्षिणी पड़ोसी देश हैं. ये इस लेसन का क्वेश्चन आंसर है. आप जो इसे कंप्लीट कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा. जो भी वीडियो में दिख रहे हैं, जितने भी सारी चीज़ें हैं, आप जो है उसे कॉपी पर लिख के नोट्स बना लीजिएगा. और ये क्वेश्चन आंसर है, इसे भी आप लिख लीजिएगा. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्वेश्चन नंबर 1 इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू. तो राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड त्रिपुरा. आंसर है उड़ीसा. सेकंड है, द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज 97 डिग्री 25 ईस्ट, 68 डिग्री 7 ईस्ट, 77 डिग्री 6 ईस्ट, 82 डिग्री 32 ईस्ट. आंसर है 97 डिग्री 25 ईस्ट. थर्ड क्वेश्चन, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर्स विथ. इसका आंसर है नेपाल. इफ यू इंटेंड टू विजिट Kavratti during your summer vacations, which one of the following union territories of India you will be going to? तो हमारा है लक्षद्वीप. My friend hails from a country which does not share land boundaries with India. Identify the country. इसका आंसर है ताजिकिस्तान. ये आपका नॉर्थ में आता है, जम्मू कश्मीर के ऊपर है. नेम द ग्रुप ऑफ इंडिया लेइंग ऑन द अरेबियन सी. लक्षद्वीप है. नेम द कंट्री विच आर लार्जर दैन इंडिया. तो आपका फर्स्ट आता है रशिया, कनाडा, यूएस, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया आर लॉन्गर देन इंडिया. विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज ऑन इट्स साउथ ईस्ट. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. विच आइलैंड कंट्रीज आर आवर साउथर्न नेबर. Maldives and Sri Lanka. The sun rises 2 hours earlier in Arunachal Pradesh as compared to Gujarat in the west, but the watches show the same time. How does it happen? The longitudinal gap between Arunachal Pradesh and Gujarat is about 30 degrees. Due to this is time lag of about 2 hours between these states. Since Arunachal Pradesh is in the east, hence the sun rises earlier there compared to in Gujarat. Indian Standard Time is taken from the time of Standard Meridian of India. Hence, the watches show the same time in both the states. 11 है, the central location of India at the head of the Indian Ocean is considered of great significance. Why? India is centrally located between the East and the West Asia. India is strategically located at the center of the Trans-Indian Ocean routes which connect the European countries.
in the West and the countries of East Asia. Thus, India could establish close contact with West Asia, Africa, and Europe from the western coast. Moreover, it could establish close contact and Southeast and East Asia from the eastern coast. This shows the significance of India's location in the Indian Ocean. Now, your first chapter is completed.